Hello everyone. In this lecture I will be discussing about typecasting in C++. Now typecasting is a property of converting a value from one type to another. आप काम करते हुए अक्सर गलती से ऐसे लिख पाते हैं कि डबल x is equal to 10. तो इस तरह से आप एक इंटीजर लिटरल डबल में आप ऐसे वेरिएबल को असाइन कर बैठे हैं जो कि एक डबल टाइप का है। तो इस तरह की सिचुएशंस में दैट इज ड्यूरिंग इनिशियलाइजेशन या असाइनमेंट करने वक्त, जैसे अगर आप एक वेरिएबल को दूसरी टाइप का वेरिएबल असाइन कर देते हैं या फिर फंक्शंस में काम करते हुए कि फंक्शंस में आपने ऐसा किया है कि रिटर्न वैल्यू आपने इंट दे दी है और रिटर्न जो आपने उस फंक्शन की रिटर्न टाइप है वो हमारे पास डबल आ चुकी है, या हमारे पास पैरामीटर्स के वेरिएशन हो सकती है दैट इज असाइनमेंट एंड जो आर्गुमेंट है और वो पैरामीटर्स के जो टाइप है वो मैच नहीं करती, या फिर हम स्विच स्टेटमेंट में काम करते हुए जहां पे एक्सप्रेशन जो है वो इंटीजर इंट वैल्यू में कन्वर्ट होता है, या फिर हम लॉजिकल एक्सप्रेशंस की बात करें जहां पे जैसे कि अगर हम काम कर रहे हैं इफ के साथ, व्हाइल के साथ, डू व्हाइल के साथ और हमें मालूम है कि वो कंडीशन जब इवैल्यूएट होती है वो एक बूल वैल्यू में कन्वर्ट होती है, तो ये सारी कन्वर्जंस होती हैं एक टाइप से दूसरी टाइप में, तो इसको हम कहते हैं टाइप कास्टिंग। अब टाइप कास्टिंग इंटरनली कैन बी डन बाय द कंपाइलर ताकि वो अपने रिजल्ट्स को बेस्ट वे में इंटरप्रेट कर सके, यानी कि कंपाइलर उसको परफॉर्म करता है टू बेस्ट इंटरप्रेट द रिजल्ट्स, और द प्रोग्रामर में आल्सो डू इट एक्सप्लिसिटली जब हमें कोई ऐसा काम करना है जैसे कि हमें अगर हमें लार्जर टाइप को छोटी टाइप में कन्वर्ट करना है तो हमारे पास रिजल्ट में लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकता है, तो अगर हमने उसको अवॉइड करना है तो हम एक्सप्लिसिट या एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग भी कर सकते हैं। तो हम इसलिए कह सकते हैं कि हम टाइप कास्टिंग को दो चीजों में डिवाइड करते हैं, वन इज इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग विच इज डन बाय द कंपाइलर एंड अदर इज द एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। लेट मी टेक सम टाइप कास्टिंग like int a, as I've told you that it is used in initialization or assignment. So I will show you here. Int a is equal to a character literal, or you can say a long int b is equal to some integer literal. As you remember that for long int we have to accompany l character followed for the long integer literal, but I am simply writing it to be integer literal because I have not written l here. Okay, then we have some floating point value or double value which is being given a value of an integer. No doubt it is given in the hexadecimal notation. Okay, so now I get to see their values, what will be their values, and check whether conversions are taking place or not. So let me write here the values. A is equal to, okay, I have not named the variable, I should write double C also, and I copy this and paste it. Now I will try to run this. Control S. Now I run this program. Now you can see that for this particular you are getting the integer value 65. Now this has been converted. There is no issue over here because sign is not an issue over here, and this is again converted to an integer value, sorry, double value, because integer literal gets converted to double. So this is how the implicit conversions take place in case of initialization. And similarly we can say in case of, I can show you another case where float is equal to float some name of the variable, let it be x is equal to a. Now again this will result in some value. Let's check out, save it and run it. So it is again showing me that this is actually printed as a float value. So here this is conversions that are taking place in this case. Okay, so in addition I have told you that you can also see it in case of functions. So let us now make that program. I make a call to a function, let be func, and pass a value to it, and first I declare a function in variable, let it be int x is equal to
34. No, I will now show you narrowing of the conversion. I will make a double value and store it in x is equal to 34.56, let it be, and I pass this to this function and I receive this value, let it be y. I will print the value of y that is being returned over here. Now let me make this function. As it is returning an integer value, let me return a double value to for this from this function, and let this function accept, now it is integer value. Now let's see what happens when such things is done in this case, and let the value returned be return, let us say it return x plus 10. Okay, so this is a function. As you can see in this function, it is accepting x as a value which is of double type, but it has to be the argument is of double type, but the parameter here, the parameter of int type, and here the argument of double type. Now similarly, if you see the return value, the value returned is integer, but it is having a different type, that is double. So let's see what is the result. Save it and run it. Now okay, it is showing that okay, I have to since it is returning double, I have to make sure that it is also double over here. So you can see here the value is converted from here, it is going as a double, but it gets converted to integer. So this conversion is taking place. Now it is returning an integer, but the value here is double. So again the conversion is taking place and this is being accepted over here. So such things can happen, and this is an example of implicit conversion. Now another case we will be discussing of switch case. So let me make a program to show that. Let char c is equal to y, or a is a better choice, let me make, because its value is 65, and I use switch now I write here case 65 and I put some message over here, let it be cout, and I print the message 65 itself, and I put endln semicolon, and in case we have to also add break statement. We will be discussing switch case shortly. Now this is another statement. I cannot have the same value. I put it 66. I set it 66, and finally I enter a default value, and it be default. Now I delete this. Okay, so you can see in this code, this is a switch case statement. No doubt we have given it a value to be of character, it gets converted to integer. Now save it and run it. So you can see that it is printing 65 because we have written this message. So it can be used with switch case also, and it can also be used as a boolean when boolean expression is there. Now let me make that program also. Let it int num is equal to say 10. Okay, now I write if num followed by some message, let it be cout, num is not
0, put a semicolon. So this is one case that because num is 10, it will return a value 1 and it will execute. So let's see, run this program. Num is not 0. You can also use it with while, like you can write here while num and not 0 some message, and at the same time you decrement so that it does not become infinite loop. And let me show you the results. Now it is showing me that multiple times. I can also write it like this, num value to be printed. For that I will write num and this. So you can see here these values are being printed from 10 to 1. So similarly, this is because num is true. That is why. So you can see here that we are seeing implicit conversions in numerous cases, and this will be there. Now, implicit टाइपकास्टिंग हम अक्सर देखते हैं जब हम काम करते हैं एक्सप्रेशंस, यानी कि जैसे अगर हमने लिखा a प्लस बी, अब इस a प्लस बी, अब इस a और b के दोनों की डाटा टाइप अगर अलग अलग है या हम कोई असाइनमेंट्स कर रहे हैं, तो हम ऐसे अक्सर सिचुएशंस में आते हैं जहां पे जो वेरिएबल्स हो सकते हैं वो डिफरेंट डाटा टाइप्स के हो सकते हैं, या वैल्यूज जिसमें हम काम कर रहे हैं, जैसे इंटीजर लिटरल हमने प्लस किया दो इंटीजर लिटरल्स को और दोनों अलग अलग टाइप के इंटीजर लिटरल्स हैं। तो इस केस में कंपाइलर क्या करेगा, हमें इम्प्लिसिट टाइपकास्टिंग करेगा और एक टाइप को दूसरी टाइप में कन्वर्ट कर देगा यूजिंग द रूल्स ऑफ सब स्टैंडर्ड कन्वर्जन्स। तो वो स्टैंडर्ड कन्वर्जन होती क्या है कि जो स्मॉलर टाइप है वो कन्वर्ट हो जाती है एक वेरिएबल ऑफ लार्जर टाइप। तो इसका ये मतलब है कि अगर हमारे पास, अगर हम ये जो हमने डाटा टाइप्स लिखी हुई हैं आपको नजर आ रही हैं, अगर हम इसकी रूल्स फॉलो करें तो हमारे पास अगर एक ऑपरेंड लॉन्ग डबल का है और बाकी कोई भी दूसरा ऑपरेंड कोई और का है तो वो प्रमोट हो जाएगा लॉन्ग डबल में। इसी तरह अगर हम बात करें कि वो लॉन्ग डबल नहीं है और एक हमारे पास डबल टाइप का है, तो उस केस में जैसे यहाँ पे हम डबल और अगर हम फ्लोट लेंगे तो वो अगर डबल होगा और फ्लोट होगा तो आंसर डबल में आ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो इसी तरह अगर हम लेंगे लॉन्ग इंट और अनसाइंड लॉन्ग इंट तो वो कन्वर्ट हो जाएगा लॉन्ग लॉन्ग इंट में, ठीक है। बट हमें यहाँ पे एक एक्सेप्शन याद रखनी पड़ेगी कि अगर एक लॉन्ग इंट होगा और एक हमारे पास अनसाइंड होगा तो आंसर किस में आएगा, अनसाइंड लॉन्ग इंट में। ये थोड़ी सी एक्सेप्शन होती है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में दिखाया गया है कि आपके पास इसका एक अनसाइंड है और एक हमारे पास लॉन्ग इंट है, तो इसका आंसर किस में आ जाएगा, अनसाइंड लॉन्ग इंट। यहाँ पे हमें अनसाइंड लॉन्ग इंट में आंसर आ जाएगा, ये यहाँ पे लॉन्ग अनसाइंड लॉन्ग इंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि अनसाइंड लॉन्ग इंट की फॉर्म में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो कन्वर्जन ऑटोमेटिकली कंपाइलर करता है, इसमें हमारे पास इसको कहते हैं ऑटोमेटिक कन्वर्जन या ऑटोमेटिक प्रमोशन या वाइडनिंग ऑफ द कन्वर्जन, और इसके कारण कोई भी लॉस ऑफ डेटा नहीं होता और ना ही इसमें जब ये परफॉर्म होता है कोई एरर या वार्निंग इशू होती है कंपाइलर के द्वारा। सो सेम it produces almost the same results, that is there is no change in the results, like अगर हम लिखते हैं double x is equal to 10 तो you get the same results, okay। so हमें याद रखना पड़ेगा there are some points that unexpected results produce होते हैं, पर वो कब होते हैं, अगर हम क्या करते हैं कि हम साइंड इंटीजर, जैसे कि यहाँ पे हमने एक इंटीजर लिया है और -4 उसको वैल्यू दे दी है, और अगर हम उसको अनसाइंड में कन्वर्ट करेंगे तो अनसाइंड में ये वैल्यू रेंज से बाहर चली जाती है, इस करके ये इसको सपोर्ट नहीं करता और इस करके रेंज से बाहर होने के कारण ये हमें अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स देता है। इसी तरह कुछ कन्वर्जन्स करने पे हम क्या देख सकते हैं कि जैसे कि अगर हमने इंटीजर को कन्वर्ट कर दिया फ्लोटिंग पॉइंट में, या हमने इंटीजर को एक कैरेक्टर को हमने कन्वर्ट कर दिया इंट में, तो उस केस में भी हमारे पास ये कन्वर्जन होती हैं, ठीक है। बट उसको रेंज में होना बहुत जरूरी है, जैसे यहाँ पे हमने एक कैरेक्टर को कन्वर्ट किया डबल में, ठीक है, 0 ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड टू फॉल्स और बाकी सारी जो वैल्यूज हैं, जो ऑल अदर वैल्यूज हैं वो ट्रू में कन्वर्ट हो जाती हैं और ये बूलियन कन्वर्जन को शो करती है। इसी तरह ये भी पॉसिबल है कि एक हायर डाटा टाइप का मतलब कि एक डाटा टाइप जैसे डबल है और उसको हम लोअर डाटा टाइप में भी कर सकते हैं, जैसे अगर हम लिख दें int x is equal to 5.67, तो अगर हम ये लिखते हैं int
x is equal to 5.67। अब ये 5.67 शो कर रहा है डबल है, और ये जो इंट x है जो हमने यहाँ पे x बनाया है, तो वो x क्या है हमारे पास इंट टाइप का। तो यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो इसको कन्वर्ट करेगा और इसमें नैरोइंग हो जाएगी, तो नैरोइंग होने से ये राउंड ऑफ कर देगा और आंसर सिर्फ 5 आएगा। तो ये भी हो सकता है पॉसिबल, और कई बारी अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स भी आ जाता है। तो इस नैरोइंग को अवॉइड करने के लिए हमारे पास इस नैरोइंग को Now let us discuss about the implicit conversions that I have discussed. Now the first rule says that the smaller type is promoted to a larger type. So let us discuss int a is equal to sum a, and let's see what happens when we print this value. We save it and we run it. So you can see here 65 gets printed. Similarly, you can think of converting char, let us say we assigned a boolean value as it is a smaller, treated as smaller value. Now we save it and run it. So you can see here the value is a. I can also write here the value that is bool. Okay, it is converted to character. So this is the character that is displayed, because by default it is 1. So 1 gets converted to character and the corresponding character is printed. You can check the integer value of that character to be very precise. Let's see what will be the integer value, and it is 1. So it is indicating over here. So this is how you convert. Okay, similarly I can talk about float and set a value of an integer literal. Save it. Now this is again converted to float, and float value is being displayed. Similarly, you get a float value converted, float literal converted to double. F, and here we have written F. Now let us save and run it. So you can see that it is converted to double and the value is being rounded off. So one thing is important, that if you have a variable of type unsigned int and one of long int, I'm specifying literals for the same. If you, okay, size of is to be written. So if you save it and run it, you will get it converted to long int. In our case, unsigned long int, that is the data type will be the size of unsigned long int will be returned. So this is how we are showing that a smaller type is converted to, but we should be careful when converting a signed type to an unsigned type. So let me check for that. Unsigned x is equal to -4. So in this case, if you try to print, -4 is an integer literal, and if you try to print, you can see that answer is something that you are not expecting, and this is because it goes out of range. Or you can also write like unsigned long x is equal to 0 minus 1 L. So let us say what will be the value over here. Again, some unexpected values. This has to be taken care while converting signed integers to unsigned integers. Similarly, you can convert an integer to double. Integer type, in fact not integer, it can be integer type itself. I have to write x over here because it is already written. Save it and run it. So you get the ASCII value, that is 65 for this particular character. Similarly, it works with wchar underscore t types also, where you can see here, let us write for wchar t types.
and let the variable be x, and for that I write some value. Let it be /u, or it can be 89a2, and if I try to get this value assigned to an integer, so it is converted to an integer, and it will print the value. Let me print the value of y. So I save it and run it. So you get the integer value of this literal, and this is shown here, and actually it is converted to the appropriate value, integer value, and then shown. Similarly, you can convert a higher data type to a lower data type. So let us try for that. We have a float, which is considered a lower data type in comparison to double. So let dbl max include float type. So I run it. Okay, I'm sure to print the value of x. Now here you are getting infinity as the answer, because you are actually converting a higher type to lower type. So this is known as narrowing conversion or type cohesion. And similarly, you can think of giving it some value. Let it be 0.4567898. Okay, this is a double value. Now let's see what is the value of this number. You are actually converting a larger type to smaller type. So this पास एक्सप्लिसिट कास्टिंग की फीचर अवेलेबल है। तो इस एक्सप्लिसिट कास्टिंग में क्या होता है कि जो जब भी हमने ये इंश्योर करना है कि नैरोइंग करने वक्त हम जो कहते हैं हम प्रोग्रामर की चाहता है कि इनकरेक्ट रिजल्ट्स ना आए, तो हमें खुद भी प्रोग्रामर को क्या करना पड़ेगा, फोर्स करनी पड़ेगी कुछ कन्वर्जन्स, और इसको कहते हैं एक्सप्लिसिट का कास्टिंग। अब इसमें होता क्या है कि लार्जर टाइप इज कन्वर्टेड टू स्मॉलर टाइप, तो यहाँ पे हम इसको फॉलो करते हैं। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे बेसिक नोटेशन है वो है कि हम इसमें कास्ट नोटेशन यूज कर लें, यानी कि हम ब्रैकेट में अगर जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे, अगर हम बात करें कि हमारे पास ओके हमने लिखा फ्लोट x इज इक्वल टू, अगर मैं इसको सीधा दे दूं 5/9, तो आप जान के हैरान होंगे कि इसका आंसर आपके अकॉर्डिंगली आउटपुट आप एक्सपेक्ट कर रहे थे 0.559, बट यहाँ पे आंसर आ जाएगा 0। तो इसको अवॉइड करने के लिए आपको इसको फ्लोट या डबल, अगर आपने टाइप दी है तो अगर डबल x लिखा तो डबल, तो इस तरह से लिखना बहुत जरूरी हो जाएगा। तो ये जो हमने ब्रैकेट में इसको कास्ट किया, इसको कहते हैं कास्ट ऑपरेटर या कास्ट नोटेशन, और ये सेम है जो C से बोरो की गई है। पर C++11 में कुछ नए ऑपरेटर्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जिसमें कॉन्स्ट कास्ट आता है, स्टैटिक कास्ट आता है, डायनेमिक कास्ट आता है और रीइंटरप्रेट कास्ट आता है। Have a void pointer. Conversions take place over there also, and before that I put a number. Let us say number is equal to 10, and assign this the address of this number. Okay, so what I do is, if I try to print this value straight away, I will get something that is not expected. It is showing me the error. I can avoid this error by converting it to int pointer, because the number is of type int. तो यहाँ पे ये करने से मेरी वो एरर और इसकी वैल्यू प्रिंट कर देगा वो। अभी हम इसके बाद स्टैटिक कास्ट पढ़ेंगे, वहाँ पे हम ये देखेंगे कि ये भी एक काम वो करता है। तो इसको रन करते हैं। अब यहाँ पे हमें पॉइंटर नहीं, इंट पॉइंटर लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से हम ये पॉइंटर्स के केस में भी इम्प्लिसिट कास्टिंग कर सकते हैं। अब इसी तरह हम एक्सप्लिसिट कास्टिंग में हम क्या करते हैं, जब नैरोइंग कर रहे होते हैं डेटा टाइप की,
तो हम उसको फोर्सफुली प्रोग्रामर उसको अवॉइड करता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने अगर हम सीधा लिखते हैं 5/9 और इसको प्रिंट करते हैं, सेव कर लेते हैं और इसको रन करते हैं, तो हमारे पास 0 आ रहा है। पर हमें एक्सपेक्टेड कुछ और था, तो उसको अगर आंसर लेके आना है तो हमें इसको ऐसे लिखना पड़ेगा और इस तरीके से हम यहाँ पे ये पहुंच जाएंगे। तो ये हमें एक्सप्लिसिट टाइपकास्टिंग के रूल्स, अभी हमने पॉइंटर की एक्सप्लिसिट टाइपकास्टिंग की क्योंकि हम उसको एक्सपेक्टेड रिजल्ट चाहते थे। ओके।